Okay guys, now the reason behind to form this video that when you will apply Pythagoras theorem and when you will apply simultaneous linear equation to form equation. So guys, look here. What is said? ABCD is a rectangle. This means this ABCD, this figure is a rectangle. This PQR is a rectangle. So guys, this is also a rectangle. Both are rectangle. So guys, we know that in our syllabus, in midterm syllabus, in the second term syllabus, two topics involving number one Pythagoras theorem and number two simultaneous linear equation. तो guys story sums में हम कैसे पता लेंगे कि we will solve this we will form equation simultaneously or we will form equation with Pythagoras theorem, because Pythagoras theorem is also an equation relation between the three sides of a right angle triangle. So guys, look here. He said ABCD is a rectangle. Then this is the first clue. PQR is also a rectangle. So guys, हमें कैसे पता लगेगा कि हम he said find x here in this diagram he said find x, and in this diagram he said find x and y. So guys, we know that what is simultaneous linear equation. Simultaneous linear का मतलब होता है when we finding two variables at the same time. To find two variable we need two equation. तो guys, हम simultaneous equation कब form करेंगे? When the examiner or me said or in the exam in the test paper I said find the value of x and y. तो guys, जब हम एक साथ दो variables find करते हैं x and y, तो we know that we will solve it simultaneously. It's mean we will form simultaneous equation when we find them x and y together. तो guys, जब भी examiner कहेगा find x and y, find two variables, it's mean we will form simultaneous equation. To find x and y, two variables, I need two equations. So guys, in this question, we will solve it simultaneously. It means we will form simultaneous linear equation. We will form two equations. But here, look here guys. ABCD is a rectangle. AB is the longest side. We know that in rectangle, the two opposite longest side. AB and DC are the two opposite longer side. So we know that in rectangle, the two opposite longer side are equal. BC and AD are two opposite shorter side. So guys, we know that in rectangle the opposite side are equal length. If this is length, so this is also length. If this is breadth, so this is also breadth. It means if this is x plus 2, so this will be also x plus 2. If this is x, so this is also x. So guys, look here. If you look here very carefully, all the three things, the length of the rectangle, longest side, the shorter side, breadth of the rectangle, and the diagonal of the rectangle. What is diagonal guys? The line joining the opposite corner, the distance between A and C. This line is called diagonal. So guys, in this figure, all the three things, the length of the rectangle, the longest side, the breadth of the rectangle, the shorter side, and the diagonal line joining the opposite corner, all three of them given are only in term of x plus 2, x centimeter, x plus 4 centimeter. So guys, in this question, only x is using. So he said find x. So guys, this is the main clue. This x tells us we will not solve it simultaneously. To find the value of x, we will not form simultaneous linear equation. Because जब भी हमें दो वेरिएबल फाइंड करने थे देन वी फॉर्म साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, बट जब हमें एक ही वेरिएबल फाइंड करना है तो विल नॉट सॉल्व इट साइमल्टेनियसली. नाउ इन दिस केस वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. तो गाइस, वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल टू राइट एंगल ट्राइंगल. हमें पता है गाइस, पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है. तो मैं इस रेक्टेंगल में पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करूंगा? तो गाइस, हमें तीन प्रॉपर्टीज पता है. द थ्री प्रॉपर्टी विच गिव अस राइट एंगल ट्राइंगल in rectangle are: number one, opposite sides are equal guys. Okay, number two, ये इतनी important property नहीं है for Pythagoras theorem. Opposite sides are equal. The second and very important property guys, all the four angles. Look here guys, in rectangle all the four angles, this is right angle, this is right angle, this is right angle, and this is right angle. So guys, this is very important property. In rectangle all the four corners, all the four interior angle are right angle. So guys, right angle triangle के लिए right angle होना जरूरत है. We get a right angle triangle. Then the third and the last property which basically give us right angle triangles. Okay, like look here guys. So the diagonal, we know that in rectangle both the diagonal are equal, and this diagonal and this diagonal are equal, and then if this is 10, so this is also 10. And second thing guys, we know that this diagonal give us two right angle triangle. Why? Because we know that this interior angle is right angle. We know that this interior angle is right angle. Okay guys, so here he said this is x plus 2 guys. अगर ये x plus 2 है, so I know that this is also x plus 2 because opposite sides are equal in length. The two longer opposite sides are equal in length. This is given breadth guys, so breadth is x. अगर ये x है तो guys we know that this is also x. The first property, opposite sides are equal. अगर ये x है तो ये भी x, ये x plus 2 है तो ये भी x plus 2. तो guys we get two right angle triangle, and diagonal is also given guys. The diagonal is given x plus 4 centimeter. तो
तो guys in this way we get two right angle triangle. और हम Pythagoras theorem कब apply करते हैं? When we have a side, when we using the sides of a right angle triangle. तो look here guys, so we have two right angle triangle. This is first right angle triangle. So guys, this diagonal is now hypotenuse. This diagonal is the hypotenuse, and this shorter side breadth will be perpendicular, and this longest side length will become the base of a right angle triangle. So look here guys, we get two right angle triangle, this right angle and this. We know that both the right angle are triangle. This diagonal line of the rectangle become the hypotenuse of a right angle triangle. This length of the right angle of the rectangle will become the base of the perpendicular, and this breadth, the shorter side of a rectangle, will become the perpendicular of a right angle triangle. So guys, look here, it means we will apply here Pythagoras theorem. What is Pythagoras theorem? Hypotenuse square equals to base square plus perpendicular square. Guys, it is relation between the three side. Which three side? The longest side hypotenuse, base and perpendicular. And what was the relation? The relation was the square of the longest side is always equals to sum of the square of two shorter side. Okay guys, so look here, now we're substituting the value. So in this right angle triangle, this is hypotenuse guys, this is hypotenuse, this is base, and this is perpendicular. So what is hypotenuse? It is always opposite to right angle. This is opposite to right angle, this is hypotenuse. So guys, hypotenuse is here x plus 2, or hypotenuse के ऊपर is square. Then we have base square and we have perpendicular square. So guys, what is base? This is my base. The length of the rectangle will become the base, x plus 2 centimeter, and this become the perpendicular guys. Guys, one more thing जो मैंने आपको बताया था, रिमेंबर मैंने क्या बताया था कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम ब्रैकेट आइडेंटिटी से ओपन करेंगे. लुक हियर गाइस, हाउ मेनी टर्म्स इनसाइड दिस ब्रैकेट? Inside this bracket we have just one term. तो whenever we have just one term inside the bracket, look here guys, अगर ये इस तरह होता, look here like this, 20 square equals to 40 square plus x square. So guys, when we have just one term inside the bracket, we will not using identity. When we have only one term inside the bracket, we will not use identity. When we have one term inside the, because identity में दो terms होती है, square of the sum of two term. So guys, this time we will solve this bracket by using identity. Okay guys, we will solve this by using the identity. But this will be open directly x into x square. I hope I make it clear guys. बाकी सब कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ. ये सिर्फ एक रिव्यू था कि आप लोग जो ब्लेंडर करते हैं ना, इसके लिए वीडियो है. Come to guys this one. Look here guys, this is also a rectangle, but this time all the length or both the two, look here, both the length given, both the breadth given, both the longer side given, both the shorter given. But this time the length and breadth are given in term of xy. Look here, this length is given in term of xy, this is given in term of xy, this is given in term of xy, this is given in term of xy. So guys, when he said find two variable, find x and y, तो we will not use Pythagoras theorem, okay, because two variables के लिए हम use करते हैं simultaneous linear equation. तो guys, simultaneous linear equation के लिए आपको दो equations की ज़रूरत पड़ती है, okay. So how can we make two equation? Okay guys, तो equation बनाने का concept याद रख लो in rectangle and parallelogram. Number we will using the fact, वो fact होते हैं guys, opposite sides are equal. Look here, opposite sides are equal, opposite. So two shorter side are equal to longer. So we know that what are the two longer side? The two longer side are guys length is equals to length. Okay guys, and the second fact guys, the second fact is breadth is equals to breadth. So we know that we will use these, first of all we will use these two facts. लेंथ इज इक्वल्स टू लेंथ, ब्रेथ इज ब्रेथ इक्वल्स टू ब्रेथ. गाइस, इसके अलावा और फैक्ट क्या होता है इक्वेशन बनाने के लिए? अगर वो हमें एरिया दे देता तो हम एरिया की इक्वेशन, बिकॉज ऑल द फॉर्मुलाज आर इटसेल्फ एन इक्वेशन. पेरीमीटर दे रहा है फॉर्म. तो गाइस, राइट नाउ ही गिव अस नो एरिया, नो पेरीमीटर, ही जस्ट गिव अस फोर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. तो वी नो दैट द फोर लेंथ आर टू लेंथ, द टू लॉन्गर साइड आर लेंथ, द टू शॉर्टर साइड आर ब्रेथ. तो गाइस, दिस इज अ फैक्ट ऑफ रेक्टेंगल. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, चाहे वो इन टर्म ऑफ एक्स दे, वाई दे, जेड दे. वी नो दैट ये दोनों साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है इस साइड के. तो गाइज यूज दिस फैक्टर. व्हाट इज फर्स्ट लेंथ? द फर्स्ट लेंथ इज गाइज 5x minus 2y plus 1 equals to the second length is this guys 6x plus y. So guys, I got the first equation. Come to the second one. So what is second fact? Breadth is equals to breadth. So guys, this is the two shorter side. This shorter and this shorter is equal to this side is equals to this side. So guys, we are using the fact of the first shorter side is 3x, okay, plus y plus 6 plus y
plus 6. It is equals to this side 4x minus y. It is 4x minus y. After this guys, we know that this time we are forming simultaneous linear equation. तो guys we get two equation but we know that for elimination and substitution हमें इसको एक standard way में arrange करना है. वो standard way क्या होता है? All the variable for elimination and substitution इसको पहले इसकी format है. वो format क्या होता है simultaneous linear का? Variables on one side and number on other side. तो look here guys, हमें यहाँ से ये +1 shift करना है, हमें यहाँ से ये 6x shift करना है, हमें यहाँ से +y शिफ्ट करना है. तो गाइज जो चीज़ शिफ्ट नहीं होगी लाइक दिस 5x शिफ्ट नहीं होगा, ये -2y शिफ्ट नहीं होगा. गाइज वन मोर थिंग, सबसे ज़्यादा जो मैंने मिस्टेक नोटिस किया, ऑलवेज रिमेंबर गाइज जब हम अरेंज करते हैं ना लेफ्ट हैंड, अगर मैं इस साइड को यहीं पे अरेंज कर रहा हूँ, यहीं इक्वल्स टू की दूसरी साइड नहीं ले जा रहा, तो नो ऑपरेशन विल चेंज. प्लस चेंज टू माइनस, माइनस चेंज टू प्लस नहीं होगा. वो तभी पॉसिबल है व्हेन आई शिफ्ट इट ऑन द अदर साइड. इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाऊँ तब ऑपरेशन लाइक +1 है तो गाइज मैं इसको दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ, देन ऑपरेशन विल चेंज. एडिशन सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में साइन चेंज नहीं होता. मल्टीप्लाई चेंज टू डिवाइड, डिवाइड चेंज टू मल्टीप्लाई. तो गाइज इट्स मीन आई एम शिफ्टिंग दिस एंड दिस. तो मैं इस साइड पर इक्वल्स टू के इस तरफ ला रहा हूँ, देन डेफिनेटली ऑपरेशन चेंज. तो +6x विल बिकम -6x गाइज. ओके गाइज, एंड +y लुक हियर गाइज, ये -2y अपनी जगह पे, इस इन दोनों को मैंने शिफ्ट नहीं करा. ये +y यहाँ जाके हो जाएगा -y. ओके गाइस, तो लुक हियर, जैसे हमने शिफ्टिंग करी, हमने इस +1 था, -1 इक्वल्स टू की दूसरी तरफ लेंगे, +y इक्वल्स टू की दूसरी तरफ लेंगे, -y +6 इक्वल्स टू के, इन दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा. ताकि मैं -2y पहले लिख लूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो गाइस लुक हियर, प्लस माइनस माइनस, दीज आर टू सेम टर्म, दीज आर टू सेम टर्म, प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ बिगर एब्सोल्यूट -x, माइनस माइनस प्लस, साइन ऑफ बिगर नंबर -3y इक्वल्स टू -1. तो आई गेट द फर्स्ट इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. गाइस अब इसको आगे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में यूज करेंगे. सेम थिंग वी विल डू हियर, वी विल शिफ्टिंग ऑल द वेरिएबल ऑन द वन साइड एंड वी विल शिफ्टिंग कांस्टेंट ऑन द अदर साइड. तो गाइस इन दोनों को शिफ्ट नहीं करें, इन दोनों को सिर्फ अरेंज करें. इक्वल्स टू के मैं इसी तरफ रख रहा हूँ, मैं इसको इक्वल्स टू के दूसरी तरफ नहीं ले जा रहा. लुक हियर, मैं सिर्फ +y और xy को आई एम जस्ट अरेंजिंग इट गाइस. लुक हियर, आई एम नॉट शिफ्टिंग ऑन द अदर साइड. ठीक है, आई एम शिफ्टिंग दिस 4x. तो गाइज यहाँ +4x है, यहाँ जाके हो जाएगा -4x. जब इक्वल्स टू की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे ऑपरेशन, -y यहाँ जाके हो जाएगा +y. तो मैंने इसे भी शिफ्ट किया. आई एम ऑल्सो शिफ्टिंग दिस 6, ये +6 दूसरी तरफ जाएगा तो इट बिकम -6. ओके गाइज, तो इट बिकम प्लस मतलब क्या 3x -4x +y इक्वल्स टू -6. तो सेम टर्म सेम टर्म. तो गाइज इट बिकम प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ बिगर नंबर -6 प्लस 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 +1y +1y. तो गाइज इट बिकम +2y इक्वल्स टू -6. दिस इज इक्वल. तो गाइज अब इसमें आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कुछ भी अप्लाई कर सकते हो. आई होप आई मेक इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू.